So diuretics means what? These are the drugs which increases the urine formation. So diuretics are the drug which increases the urine formation. So diuretics, they have numerous application in case of various conditions, like for example in case of edema, in case of congestive cardiac failure, in case of hypertension. So diuretics are used. What do you mean by diuretics? These are the drug which increases the formation of urine volume. So they increase the urine volume, they decreases the blood volume. Okay, they increases the urine formation, they increases the urine volume, they decreases the blood volume, remember. And they are also useful in the different conditions like edema means excessive accumulation of fluid. So they are useful in the generalized edema, they are useful in the congestive cardiac failure, they are useful in the as an antihypertensive drug, they are also useful as a in they are also used in the this to reduce the intraocular tension. They are also useful in the to reduce the intracranial pressure. अगर आपके cranium में fluid जमा हो गया ज़्यादा तो वो डिक्रीज करने के लिए डायरेक्टिक्स काम आता है. आपके आईज में जो एक्वियस ह्यूमर है वो अगर ज़्यादा हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें आपको मोतियाबिंद हो जाएगा. सो इन दैट केस आल्सो डायरेक्टिक्स आर यूज्ड. Glauco, so that's why there are numerous applications like glaucoma, hypertension, then intracranial tension, increased intracranial tension, edema. They are the use of diuretics. We'll see it. So diuretics classification is very important. Again, you have to remember the classification anyhow. So first class is nothing but the known as a high ceiling diuretics, and it is also known as a loop diuretics. Remember, it is known as a loop diuretics. High ceiling diuretics or loop diuretics, they are nothing but the inhibitors of sodium potassium chloride contraport. अभी ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है बाद में देखेंगे when we will see the mechanism. Remember the examples: furosemide, okay, furosemide or furosemide, bumetanide, torsemide. Okay, so all these mides and nides also are coming. So they are the high ceiling diuretics, and they are also known as a loop diuretic because they will act on a loop of Henle. High ceiling diuretics question आ चुके हैं. Second class is known as a medium efficacious diuretics. So they will increase the urine formation. They have high potency. Okay, they have high ceiling diuretics. They will increase more urine formation. They are known as loop diuretics. Then medium efficacy having diuretics. They are inhibitor of sodium chloride symport. What is the role of this pump? We'll see. So in that you have two category. So thiazide diuretics. First one is a thiazide diuretics. Please mute yourself. First class is known as a high ceiling diuretic or loop diuretics, and they are example furosemide, torsemide, bumetanide, etc. Ethacranic acid is also comes under this category. Ethacranic acid. So they are known as loop diuretics or high ceiling diuretics. They inhibit the sodium potassium chloride contraport. Then second class is known as a medium efficiency diuretic or medium efficacy diuretics. So they inhibit the sodium chloride symport. So in that you have two subclasses. First one is thiazide. First one is thiazide diuretics. So benz thiazides or thiazides. So in that you have hydrochlorothiazide, hydroflumetazide, and benz thiazide. Hydrochlorothiazide, hydroflumetazide, and benz thiazide. And okay, and thiazide like diuretics. Thiazide like diuretics like chlorthalidone, metolazone, then zipamide, indapamide, and clopamide. So mides, indapamide, zipamide, clopamide, metolazone, and chlorthalidone. They are thiazide-like diuretic, means they are not having had structure similar to thiazide, but they will act similarly with the thiazide. So that's why medium efficacy diuretics. First is the benz thiazides or thiazide diuretics, hydrochlorothiazide, hydroflumetazide, benz thiazide, and then thiazide like chlorthalidone, then metolazone, zipamide, indapamide, and clopamide. देन वीक डायरेटिक्स, तो जो हाई सीलिंग डायरेटिक है वो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन करेंगे. मीडियम इफिकेसी वो थोड़ा सा कम यूरिन फॉर्मेशन करेंगे. एंड वीक और थर्ड क्लास इज वीक और एडजुएंट डायरेटिक्स, वो बहुत ही कम यूरिन फॉर्मेशन करेंगे. सो इन दैट यू हैव डिफरेंट सब क्लासेस. फर्स्ट क्लास इज नथिंग बट द कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर. So acetazolamide, torsamide, acetazolamide and bumetanide. Acetazolamide is the carbonic anhydrase inhibitor. So weak diuretic known as a
First is a carbonic anhydrase inhibitor like acetazolamide. Second class is nothing but the osmotic diuretics. So osmotic diuretics like mannitol, then isosorbide and glycerol. These are known as a osmotic diuretic. They act by their osmotic property. Then potassium sparing diuretic. All these diuretics like high sealing, medium efficacy diuretic, weak diuretics may carbonic anhydrase and osmotic diuretics. All these category, जो upper category, so they causes loss of sodium as well as potassium, and therefore they causes hypokalemia, and that's why potassium sparing diuretics are the new class of diuretics. They prevent the loss of potassium. In that you have first aldosterone antagonist like spironolactone and eplerenone. Spironolactone and eplerenone. Second, renal epithelial sodium channel inhibitors. These are the new class again. In that you have amiloride and trimetylene. तो ये क्लास से याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. Renal epithelial sodium channel inhibitors. So these are amiloride and trimetylene. So these are the different classes of diuretics. ये क्या करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज करेंगे. So all these will increase the urine formation. Diuretics means they will increase the urine formation. Antidiuretic means they will decrease the urine formation. That you have first class. So all these are the analog of your antidiuretic hormone known as vasopressin. So antidiuretic hormone and its analog vasopressin, desmopressin, lepressin and telepressin. So antidiuretic. Then again natriuretics. Natriuretics में आता है thiazides and amiloride. Then miscellaneous compound में आता है carbamazepine, chloropropamide and indomethacin. So these are the antidiuretics. They will decrease the they will decrease the urine formation, and diuretics means they will increase the urine formation. So we'll see the classification 2-3 times. Again you can see the classification, different classification. So classification according to the mechanism of action, or classification according to the site of action. Okay, site of action. So first site first is known as a proximal renal tubules. Site first is known as a PCT. So those drugs which act on the site first, example carbonic anhydrase inhibitor like acetazolamide, spironolactone, then osmotic diuretics like mannitol and all that, then vasodilators like aminopilin, caffeine, theophylline. So these drugs act on a site first. Remember the mechanism. Site first मतलब क्या? वो कहाँ पे act होंगे? Proximal convoluted tubule. Okay, PCT. So on a proximal convoluted tubule, carbonic anhydrase, then osmotic diuretics, your central stimulant like theophylline, caffeine, aminopilin. Now second class is nothing but the, or second site for action of diuretic is nothing but the ascending limb of loop of Henle. Second means loop diuretics. So here furosemide, bumetanide and ethacranic acid. Furosemide, bumetanide and ethacranic acid they act. So this one is proximal convoluted tubule known as site 1. Site 2 is known as a ascending loop of Henle. Site 3 is known as a, sorry, this one is descending, not ascending. It is a descending loop of Henle. And site 3 is known as a ascending loop of Henle. Here thiazides and organic mercurials will act. Okay. Now site 4. What is site 4? Site 4 means distal convoluted tubule. So drugs like steroidal, drug like spironolactone and all that, and non-steroidal trimetylene. These drugs act on a distal convoluted tubule, and that's why they are known as site 4 diuretics. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है. आपको एग्जांपल देंगे लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, व्हाट इज द इट इज नोन एज वन ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसा भी पूछ सकते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नोन एज वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट ऑन साइट 4 ऑफ द नेफ्रॉन. तो साइट 1 क्या है? पीसीटी. उसके ऊपर कौन से ड्रग एक्ट होते हैं? कार्बनिक एनाहाइड्रेज, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड सेंट्रल स्टिमुलेंट. उसके बाद में साइट 2 क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कौन एक्ट होता है? लूप डायरेटिक्स लाइक furosemide, bumetanide and ethacronic acid. थर्ड साइट क्या है? इज नोन एज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तो यहाँ पे कौन एक्ट होता है? वहाँ पे एक्ट होता है थायजाइड्स एंड मर्क्यूरी, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स. साइट 4 कौन सा है? साइट 4 क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. ओके, यहाँ पे स्टेरॉइडल ड्रग लाइक स्पाइरोलैक्टोन एंड नॉन स्टेरॉइडल डायरेटिक लाइक ट्राइमेट्रिन. सो दे एक्ट ऑन. रिमेंबर द साइट्स ऑफ एक्शन 1, 2, 3, 4. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद diuretics are also classified according to their efficacy. We have already seen this classification in the previous slide. So according to efficacy,
highly drug having high efficacy like loop diuretics like furosemide and ethacronic acid. Moderately efficacious diuretics like thiazide diuretics, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, benzthiazide, polythiazides, chlorothiazidone, metolazone, and indapamide. They are known as a moderate efficacy diuretics. Okay, मतलब ये then low efficacy diuretics like osmotic diuretics is there. Osmotic diuretics like menthol, potassium sparing diuretics, okay, like spironolactone and metapyrone and carbonic anhydrase inhibitor, acetazolamide. Okay, so according to efficacy means high efficacy means they will increase the more urine formation. Okay? Medium means they will increase the medium urine formation, medium moderate efficacy, and low efficacy means they will only increase the little urine formation. So according to the site of action, according to the efficacy, okay, according to the chemical also there is another class. You can say there are different sites for action. Central जो है central stimulant they will increase the urine blood flow and they will increase the filtration of urine as well as they will also act on site 1. Site 1 is known as a proximal convoluted tubule. So site 1 में site 2 जो है ये descending limb of है. तो देखो site 1 पे कौन है यहाँ पे proximal convoluted tubule पे कौन act होता है proximal convoluted tubule ये जो है proximal convoluted यहाँ पे acetazolamide. साइड 2 पे कौन एक्ट होता है यहाँ पे लूप डायरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड लूप डायरेटिक्स. साइड 3 कौन सा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ पे भी लूप डायरेटिक्स एक्ट होता है और यहाँ पे लाइक फ्यूरोसेमाइड पिमेटिनाइड. देन साइड 4 क्या है साइड 4 इज नथिंग बट द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यहाँ पे कौन एक्ट होगा थायजाइड डायरेटिक्स. क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. साइड 5 क्या है साइड 5 इज नोन एज अ कलेक्टिंग डक्ट. सो साइड 5 पे कौन एक्ट होगा यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स लाइक स्पाइronolactone ट्राइमेट्रिन एक्सेट्रा. सो रिमेंबर साइड 1 पे एक्ट होता है कार्बनिक अनहाइड्रेज, साइड 2 पे एक्ट होता है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एंड लूप डायरेटिक्स, साइड 3 पे एक्ट होता है लूप डायरेटिक्स, साइड 4 पे थायजाइड डायरेटिक्स, साइड 5 पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स. तो आपको इतना ही समझ में आएगा पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक का एक्ट होता है साइड 5 पे. तो बाकी के जो है जो बाकी के डायरेटिक्स है ऑल कॉजेस पोटेशियम लॉस एंड दे कॉजेस द हाइपोकैलेमिया. ओके, ओनली पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक दे विल नॉट कॉज हाइपोकैलेमिया. यहाँ पे एक बेसिक फंडा होता है कि देखो यहाँ पे जो भी सॉल्ट है सोडियम, जैसे सोडियम यहाँ पे यूरिन फिल्टर हो गया, सोडियम वाटर इसमें आ जाएगा. तो सोडियम जैसे रीएब्सॉर्ब होगा तो उसके साथ में वाटर भी रीएब्सॉर्ब होगा. सोडियम जैसे एक्सक्रीट होगा तो उसके साथ में वाटर भी एक्सक्रीट होगा. ये याद रखो क्योंकि जहाँ पे भी सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है मतलब ट्यूबल्स में जा रहा है वहाँ पे वाटर भी जाएगा. जहाँ पे भी सोडियम अंदर ब्लड में आ रहा है वहाँ पे वाटर भी आएगा. ठीक है. नाउ यू कैन सी क्लासिफिकेशन another classification. Diuretics are the drug which will increase the urine formation. Now first class is nothing but the weak diuretic. In that you have osmotic diuretic like sodium, potassium salt, mannitol is there. Okay, isosorbide is there. Okay, glycerin is there. So glycols, isosorbide, sodium and potassium salts, then mannitol. All these are the osmotic diuretics. कुछ examples में यहाँ पे नहीं है. Then xanthin alkaloids. So aminophylline is there. Caffeine, aminophylline, theophylline. Then carbonic anhydrase inhibitor like acetazolamide. So they are known as a weak diuretics. Now moderate effective diuretics. So in that osmotic way, for example, mannitol, isosorbide, sucrose, glycerol. Then thiazide diuretics like chlorothalidone, thiazide like diuretic like chlorothalidone. Then clopamide, chlorzoxazone, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, benzthiazide. They are known as a moderately effective diuretics or moderately efficacy diuretics. So they will have rapid onset of action, 10% excretion of filtered sodium and chloride. Wide spectrum, they will have a long duration of action, 8 to 72. They are ineffective in the patient with reduced GFR, जिनको glomerular filtration rate कम हो चुका है उनका, उसमें इफेक्टिव नहीं. So in that you have very efficacious diuretic or known as a high ceiling diuretics like furosemide, meprucide. They will have rapid onset of action and shorter duration of action. 20% excretion filtered sodium and chloride effective in the
They are also effective in the reduced GFR rate. Then next is a potassium sparing diuretic like trimetrin, amiloride, and spironolactone. Useful in as adjunct to the drug from group second and group three because they will have they will prevent the potassium loss. They will have potassium sparing effect. तो इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक. क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. ओके, सो व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड. अगेन क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरासेमाइड. व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ स्पाइरोलेक्टिन. इसके ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन आ चुके हैं. एक कॉलम में आपको एग्जांपल देंगे ड्रग का, दूसरे कॉलम में साइट देंगे, या फिर एक कॉलम में एग्जांपल देंगे, उसी कॉलम में वीक है, मॉडरेट है, या फिर हाईली इफेक्टिव है. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. नाउ फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज नथिंग बट द कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर. फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज नथिंग बट द carbonic anhydrase inhibitor. So before understanding this carbonic anhydrase inhibitor, so you should know what is the role of carbonic anhydrase. So what is the role of carbonic anhydrase? So carbonic anhydrase will catalyze the formation of carbonic acid. Carbonic anhydrase will catalyze the formation of carbomic acid. Which is the carbonic acid? Where is the carbonic acid? This one is known as a carbomic acid. It will catalyze the formation of carbonic acid from carbon dioxide and water. Okay, and also it will break down the carbonic acid to form a hydrogen and carbonate ions. That is the role of carbonic acid. Now where this enzyme is present? This enzyme is present in the various body anatomical structure. Like this enzyme is present in the kidney, in the renal tubules. Okay, this enzyme is also present in the your eyes, aqueous humor of your eyes. This enzyme is also present in the brain. Okay, so what is the role? This is the role. Okay, so that's why carbonic anhydrase inhibitor, they act as a diuretic. They are also effective in the reducing the intraocular tension in the glaucoma. They are also effective in the treatment of epilepsy. Okay, we'll see it again. They act on a proximal convoluted tubule. Carbonic acid anhydrase like acetazolamide, they act on a side first, known as a proximal convoluted tubule. So what they do, they causes inhibition of carbonic anhydrase by non-competitive mechanism. This is the enzyme which is required for sodium and carbonate reabsorption. Carbonic acid gives hydrogen ion which exchange with the sodium in the renal tubule. Inhibition of this enzyme result in the excretion of sodium, and you know that along with the sodium water will also excreted. So that's why. Then inhibition of carbonic anhydrase also decreases the production of aqueous humor in the eyes. It also decreases the production of aqueous humor in the eyes. That's why useful in the glaucoma. It also this inhibition of this enzyme. Okay, inhibition of this enzyme also decreases the formation of cerebrospinal fluid, and inhibition of this carbonic anhydrase is also responsible for the anti-epileptic effect of this acetazolamide. Adverse drug reaction क्या है इनकी देख ले. Metabolic acidosis. Okay, metabolic acidosis, hypokalemia occasionally. It can cause drowsiness, paresthesia. It can precipitate the renal calculi and blood dysgenesis. I will explain this. So metabolic acidosis कैसे करेगा? First one is metabolic acidosis. तो ये क्या करता है? कार्बनिक अनहाइड्रेस को इनहिबिट करता है. अगर इसका इनहिबिट कर देंगे कार्बनिक अनहाइड्रेस को, ओके, तो क्या होगा कि ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है, सॉरी ये जो कार्बनिक एसिड है, तो ये एक्सेसिव जनरेट हो जाएगा. ये कार्बनिक एसिड बाद में हाइड्रोजन से मिलता है और बाइकार्बोनेट आयन बनाता है. सो ये इंक्रीज हो जाएगा तो एसिड लेवल बढ़ जाएगा भाई. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस. हाइपोकैलेमिया मींस डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम. तो मैंने बोला है कि हर एक डायरेटिक, all diuretic causes the loss of potassium ion except potassium sparing diuretics. Hypokalemia सबका adverse effect रहेगा. It occasionally cause drowsiness, sedation करेगा, drowsiness करेगा, paresthesia, numbness in the legs, renal calculi. कभी acid level बढ़ने की वजह से क्या होगा कि kidney stone का भी problem आ सकता है. So remember what is the use of acetazolamide? So uses are nothing but the prophylaxis and treatment of high altitude illness, that is a motion sickness. मोशन सिकनेस में इसको यूज करेंगे. सेरेब्रल एंड पल्मोनरी सिंड्रोम मींस इफ देयर इज एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, इफ देयर इज इंक्रीज इन द fluid in the cerebrum, if there is increase in the fluid in the pulmonary veins, arteries. So pulmonary edema, cerebral edema, it is a drug of choice in case of acute treatment of mountain sickness and cerebral edema.
drug of choice for acute mountain sickness and cerebral edema. It is also used in the treatment of glaucoma. It is also used to prevent the periodic paralysis attack and also used as an anti-epileptic. ठीक है, anti-epileptic. So these are the uses. कुछ uses यहाँ पे listed नहीं है, मैं बोला है आपको, तो try to write. You can see the mechanism of action of this acetazolamide. So this is an extracellular fluid. This is a proximal convoluted tubules and cells containing proximal convoluted tubules. तो होता क्या है यहाँ पे? So there exists a one pump known as a sodium hydrogen antipode. Sodium hydrogen antipode, which is present in the luminal membrane of your proximal convoluted tubule. So what is the function of this pump? The function, it causes reabsorption of sodium, reabsorption of sodium, and in exchange with that it causes the excretion of hydrogen ion. Sodium reabsorb करेगा hydrogen ion को. This hydrogen, ये काम है उसका. Now in the lumen you have sodium carbonate. Sodium carbonate will be dissociated into this carbonic acid and sodium, and that sodium will be transported to, it will be reabsorbed. Now this carbonic acid is there. Now this carbonic acid is dissociated. This carbonate ions combines with this hydrogen ion to form a carbonic acid. Sorry, bicarbonate ion. So this carbonic ion and this hydrogen will combine with together to form a bicarbonate ion. Now this bicarbonate ion is break down by carbonic anhydrase to form again what? To form again water and carbon dioxide. So this water again reabsorb, and carbon dioxide is again reabsorb in the cell of proximal convoluted tubule. Now these together they again rejoined to form again bicarbonate, and this reaction is again catalyzed by this carbonic anhydrase. Now this will be dissociated in the carbonate and hydrogen ion, and that hydrogen ion is made available for excretion. वो कार्बन हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट हो जाएगा और फिर से सोडियम अंदर सोडियम आयन लेके जाएगा इधर. एंड उसके बाद में वो सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा कहाँ पे? ब्लड में. जैसे सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा. दिस इज हाउ नॉर्मली डन. नाउ व्हाट दिस acetazolamide do? So acetazolamide is known as a carbonic anhydrase inhibitor. ये क्या करता है कि कार्बनिक अनहाइड्रेस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट करेगा, इसका फंक्शन इनहिबिट करेगा. तो इनहिबिट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखो जो सोडियम कार्बोनेट है वो डिसोसिएट होके क्या बनेगा? कार्बोनेट आयन, कार्बोमिक एसिड, कार्बनिक एसिड. एंड कार्बोमिक एसिड डिसोसिएट नहीं हो पाएगा इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो डिसोसिएट नहीं होगा तो ये एब्सॉर्ब भी नहीं होगा. अगर हो गया भी फिर भी यहाँ पे भी कार्बोनिक एसिड का ही काम है, उसको भी इनहिबिट किया है, तो ये बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, फिर से हाइड्रोजन आयन नहीं देगा. कहाँ पे? सेल में. अगर ये हाइड्रोजन आयन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो हाइड्रोजन आयन किससे एक्सचेंज होता है? सोडियम से. ये बाहर निकलता है और ये सोडियम अंदर जाता है. तो ये आयन अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इनहिबिट किया है एंजाइम को इनहिबिट किया है. तो ये सोडियम आयन रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा. ये सोडियम आयन का क्या नहीं होगा? रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा. सोडियम आयन का अगर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा मतलब सोडियम के साथ में वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा. रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा मतलब क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है. सोडियम का एक्सक्रीशन अलॉन्ग विद सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन. So that causes diuresis. That is how the mechanism of action of acetazolamide. Now we will see the next drug. Next drug is nothing but the osmotic diuretics. Osmotic diuretics. So in that you have, for example, mannitol. Then mannitol is there. Then your glycol is there. Then sugar is there. Then your isosorbide is there. So examples याद रखो. यहाँ पे मैंने ज़्यादा example नहीं दिए, classification में देखा है. So they act on a proximal convoluted tubule as well as loop of Henle, descending loop of Henle. That is known as site second. Mechanism of action due to osmotic effect. To reduce the medullary tonicity. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यूरिन का या फिर ब्लड का, सो वो एक नॉर्मल मेंटेन होता है. सो दिस ड्रग्स दे डिक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. दिस ड्रग डिक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड कॉजेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सक्रीशन ऑफ वाटर ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक इफेक्ट. मतलब ये जब एक्सक्रीट हो जाएंगे उनके साथ में वाटर भी लेके जाएंगे.
The reason for absorption of sodium from tubular remain. Okay, so you know that when sodium will be absorbed back from lumen of tubules to the blood, so along with sodium, water will also be dragged. So in presence of non-absorbable solute like mannitol and all that, so diffusion of water is reduced. तो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है, वाटर का भी होता है इसके साथ में, लेकिन अगर मेंटोल है वहाँ पे तो मेंटोल की प्रेजेंस में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कम होता है, मतलब वाटर का एक्सक्रीशन होता है. ओके, सो रिड्यूस्ड related to sodium, so that net absorption of sodium is also reduced. So that's why how they causes the diuresis. That's how they causes the diuresis. First drug reaction क्या है इनके? headache, nausea, polydipsia, confusion, pain in chest. It causes cellular dehydration, thrombophlebitis, local necrosis. They are contraindicated in the tubular necrosis, in aurea pulmonary edema, then again acute left ventricular failure, cerebral hemorrhage and congestive cardiac failure. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. मैनेटॉल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ cerebral hemorrhage. So mannitol is contraindicated in case of cerebral hemorrhage. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Mannitol is contraindicated in case of cerebral hemorrhage and congestive cardiac failure. What is the uses? Uses of osmotic diuretics like barbiturate poisoning, threatened acute renal failure, raised intraocular pressure and cerebral edema. तो सेरेब्रम में प्रेशर बढ़ गया आपके खोपड़ी में प्रेशर बढ़ गया तो कम करने के लिए फ्यूरस ये मेंटोल यूज करते हैं. अगर आपके आईज में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है, ग्लाउकोमा होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? मेंटोल देते हैं. इट इज आल्सो यूजफुल इन द बार्बिटरेट पॉइजनिंग, थ्रेटन एक्यूट renal failure. Okay, increased intraocular pressure, cerebral edema. Now next class is a loop diuretics. I'm taking in a short whatever is important. Loop diuretics. Loop diuretics में आता है furosemide, bumetanide. Okay, already seen the examples. Now they act on a thick ascending loop known as site 3. They act on a thick ascending loop of Henle known as a site 3. How they will act? Mechanism of action. So they will inhibit the sodium potassium chloride symport. They will inhibit the sodium potassium chloride symport and prevent the exchange of sodium with the potassium and hydrogen, which result in the excretion of sodium. And along with sodium, water will also move, and they also inhibit the reabsorption of calcium and magnesium. तो याद रखो लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं? कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन कम करेंगे, मैग्नीशियम का भी रीएब्सॉर्प्शन कम करेंगे. तो ऑब्वियसली जिनको ओस्टियोपोरोसिस है उनमें ये यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ओस्टियोपोरोसिस है, उनको कैल्शियम कम है, तो ये कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन इनहिबिट करेंगे. तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस. और जहाँ पे भी कैल्शियम लेवल बढ़ता है बॉडी में, हाइपर कैल्शियमिया होता है, इन दैट केस दीज आर यूज्ड. ओके, लूप डायरेटिक्स. नाउ एडवर्स रिएक्शन क्या है देखो. Obviously, loop diuretics means they are acting on loop of Henle. They will cause excretion of sodium, calcium, magnesium. Okay, so obviously loss of electrolyte or serious electrolyte disturbances, loss of sodium, magnesium, potassium. That's why they can cause muscle fatigue, cramps, orthostatic hypotension, acute urinary retention. Occasionally, they can cause hearing loss. Hearing loss. तो यहाँ पे याद रखो एक लूप डायरेटिक्स में इथाक्रेनिक एसिड नाम का एक ड्रग है, इथाक्राइनिक एसिड. पर्टिकुलरली दिस इथाक्राइनिक एसिड इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस. इथाक्राइनिक एसिड इज हैविंग हियरिंग लॉस. यूजेस क्या है? दे आर वेरी सेफ डायरेटिक्स. दे आर यूजफुल इन द पल्मोनरी एडिमा, chronic renal failure. They are also useful as antihypertensive, acute renal failure, by barbiturate poisoning and hypercalcemia. कैल्शियम लेवल ब्लड का बढ़ गया तो उसमें डायरेटिक दे दो. कौन सा? लूप डायरेटिक, furosemide. Then bumetanide is a younger brother of your furosemide. Bumetanide is a younger brother of your furosemide, and it has a similar action with the like furosemide, but it is a 40 times more potent. Okay, bumetanide क्या है? bumetanide एक छोटा भाई है किसका? ये furosemide का. तो ये क्या है? 40 times more potent, and it is also used in the pulmonary edema. It can cause myopathy, मतलब problems of the muscle. Torsemide is again another younger brother. It is a 3 times more potent. It is also used in the renal edema, hypertension. Other properties are similar to
Okay, how they will act, what is the mechanism of action. So normally क्या होता है पहले ये देख लीजिए. What is normal? Okay. So normally this pump is there known as a sodium chloride, sodium potassium chloride symport. Symport मतलब आपने देखा है when we were seeing the cellular transport. So symport means movement of ions in the one direction only. Okay. Movement of sodium chloride and potassium inside the lumen known as symport. ये क्या करेगा, सोडियम का एब्सॉर्प्शन, क्लोराइड का एब्सॉर्प्शन, पोटेशियम का एब्सॉर्प्शन करेगा. तो पोटेशियम एक्सचेंज होता है बाद में थ्रू पोटेशियम पंप. इनसाइड क्या है, क्लोराइड है. ये क्लोराइड भी क्लोराइड आयन चैनल से बाहर निकलता है. वो अंदर क्या है, सोडियम बचा है. नाउ दिस सोडियम एक्सचेंजेस विद द पोटेशियम. सोडियम एक्सचेंजेस विद द पोटेशियम वाया सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्सचेंजर, एंड दैट्स हाउ दिस सोडियम इज. सोडियम का एब्सॉर्प्शन कैसे होगा, ऐसे. Now this furosemide and loop diuretics, they binds with this pump and inactivate it. So inactivate किया तो सोडियम का reabsorption नहीं होगा. तो reabsorption नहीं होगा मतलब इसका excretion होगा. सोडियम का excretion मतलब वाटर भी उसके साथ में excrete हो जाए. एंड यहाँ पे सोडियम का एक्सक्रीशन होता है, क्लोराइड का एक्सक्रीशन होता है, कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन होता है, मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन करेगा, पोटेशियम लॉस करेगा. तो हाइपोकैलेमिया, hypocalcemia, hypomagnesemia, all these are the effect of this furosemide. Now next part is nothing but a thiazide diuretics. Thiazide diuretics. So in that chlorothalidone was the first, and then after that hydrochlorothiazide and chlorothiazide, polythiazides, they are synthesized. They act on a distal convoluted tubule, that is site 4. Distal convoluted tubule known as a site 4, and they principally inhibit this sodium hydrogen exchange pump. They mainly inhibit this sodium hydrogen exchange pump. So inhibition of sodium chloride symport by competing with the chloride binding site primarily at the site paroxysmal to sodium hydrogen exchange pump. Early distal diuretic. Distal tubule के पहले एक पंप होता है sodium chloride symport, and they are known as a moderate diuretics, thiazide diuretics. Adverse degradation क्या है, they can cause hyperglycemia. Most important adverse effect, hyperglycemia. They can increase your blood sugar level. Hyperuricemia, blood uric acid level. Hypercalcemia, increase in the calcium level. Hyperlipidemia, increase in the blood lipid level. Hypokalemia means decrease in the potassium level. All these thiazide diuretics, they will have sulfonamide in their structure. Diuretics जो thiazide है उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, sulfonamide जैसे स्ट्रक्चर होता है, and that's why they can cause allergic reaction and hematological adverse reaction. Like जितने भी सल्फर ड्रग्स का होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस हो गए, तो उसको भी होता है. They cause acute saline depletion, means decrease in the sodium and chloride. Okay? They cause dilutional hyponatremia. Hyponatremia. What is meant by hyponatremia? Natremia means natremia is the term related with the sodium. Hyponatremia means decrease the sodium level in the blood. Hypernatremia means increase sodium level in the blood. Okay. Hypokalemia means decrease the calcium level in the blood. मिया मतलब ब्लड, रिया मतलब यूरिन. ठीक है, अगर यूरिन में कुछ आता है तो उसको रिया लगा दो. जैसे अल्बुमिन, अल्बुमिन अगर ज्यादा हो गया आपके ब्लड में तो अल्बुमिन मिया होगा. अल्बुमिन अगर यूरिन में आ गया तो उसको रिया बोलेंगे, रिया चक्रवर्ती. तो अल्बुमिन यूरिया, ठीक है. प्रोटीनेमिया means increased protein in the blood. Proteinuria means increased protein in the urine. यूरेमिया मतलब increased uric acid in the blood. यूरिया मतलब increased uric acid in the uricosuriya means increased uric acid in the urine. Okay. Now uses क्या है इनके, thiazide. They are diuretics. They are used as antihypertensive. They are also used in the prevent of recurrent renal calculi. जो किडनी स्टोन होते हैं रिकरेंट, मतलब एक बार निकाला फिर से हो गया, और एक बार निकाला फिर से निकाला फिर से आते हैं. So they are used to prevent the recurrent urinary calculi. They are also used as antihypertensive. They are the first line agent. Remember, they are the first line agent in the hypertension. They are also used in the nephrogenic diabetes insipidus. They are also used to treat the edema and hypercalcemia. How they will act, you can see what normally क्या होता है पहले देख लो.
नॉर्मली यहाँ पे एक पंप होता है, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब मैंने बोला है कि दोनों आयंस को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट मतलब सोडियम एंड क्लोराइड को ये ल्यूमेन में लेके जाता है, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, फिर सोडियम का एब्सॉर्प्शन होता है। सोडियम विल एक्सचेंज विद द सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, इसमें एक्सचेंज करता है और ये सोडियम कहाँ जाएगा, जाएगा ब्लड में। तो नॉर्मली ये होता है। व्हाट थायराइड डायरेटिक्स दे विल डू, थायराइड डायरेटिक्स दे विल inhibit this sodium chloride importer. Sodium will not be reabsorbed. Sodium will not be reabsorbed from this part is urine. ये यूरिन का पार्ट है, यूरिन से ये ल्यूमेन में आ रहा है। किसके ल्यूमेन में, ट्यूबल्स के ल्यूमेन में, ट्यूबल्स में, ओके। और ये ट्यूबल्स के ल्यूमेन में से यहाँ पे एक्सचेंज होके ब्लड में जा रहा है। तो नॉर्मली now thiazide diuretics inhibit this pump. Sodium will not be absorbed in the blood, and along with sodium water will also be not absorbed, so causes diuresis. तो ये यहाँ पे ही रहेगा, वो अंदर नहीं आएगा। That's how this this thiazide diuretics act. Now next one is a aldosterone antagonist. Aldosterone antagonist. Next one is aldosterone antagonist, known as a spironolactone. Spironolactone. They are mild saliuretic. They are mild diuretic. They are known as potassium sparing diuretic. Eplerenone is a new antagonist of aldosterone with less adverse action. Spironolactone क्या है, steroidal drug है that will can cause gynecomastia, hormonal imbalance, etc. Now this where they will act, the site of action is nothing but the distal convoluted tubule. ये सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं. They will act on a last part, known as a site 5 or distal convoluted tubule. So they will act as a sodium hydrogen exchange. They will inhibit the sodium hydrogen exchange in the collecting duct. So blockage of mineralocorticoid receptor and prevent the inhibition of sodium absorption in the last part of distal tubule and collecting duct. Adverse reaction क्या है इसके देख लेते हैं. Also causes hypokalemia, metabolic acidosis, gynecomastia, loss of libido, मतलब loss of loss of libido means loss of will for sexual activity. Then impotence, menstrual irregularity in the women's, gynecomastia in the males, loss of libido in the both, impotence in the male. Non-steroidal anti-inflammatory inhibit the excretion of this drug. There is a drug-drug interaction. Okay. What are the uses? It is used in the treatment of hypertension, congestive cardiac failure, hypertension with congestive cardiac failure patient with hirsutism. Okay. Hirsutism is specifically it is used for the treatment of primary hyperaldosteronism. कि aldosterone का लेवल बहुत ज़्यादा हो गए तो उसमें भी यूज करते हैं. Also known as increased aldosterone level, that is hyperaldosteronism, is also known as a Conn's syndrome. So it is used in the Conn's syndrome. Aldosterone antagonist. याद रखो इसको. Now next class is the potassium sparing diuretic. Potassium sparing diuretic मतलब क्या है? ये क्या करेंगे, सोडियम का लॉस करेंगे लेकिन पोटेशियम का लॉस नहीं होने देंगे. जो बाकी जो जितने भी क्लासेस, whatever all the classes of diuretics are, whatever we have seen, all they can cause loss of potassium, and therefore new class known as potassium sparing diuretic. So they will prevent the loss of potassium. So in that you have amelioride and trimetrin. Amelioride and trimetrin, and they act on a site 5, that is a distal convoluted tubule. Sorry, that is a collecting duct. Site 5 is a collecting duct. Potassium sparing diuretic. They will act on a collecting duct. Direct action on a late distal tubule and a collecting duct. Late part of distal convoluted tubule and collecting duct. They inhibit the renal reabsorption of sodium. Renal epithelial reabsorption of sodium. Adverse reaction क्या है? No serious adverse effect other than hyperkalemia. Troublesome diarrhea, occasionally skin rash and dryness of mouth. Used in the pseudoaldosteronism. They are the diuretic without loss of potassium. That's why they are known as potassium sparing diuretics without potassium loss. How they act? What is the mechanism of spironolactone?
तो spironolactone जो है will act on its receptor, steroid receptor, and will act on a directly DNA. Will act on a DNA and will synthesize the will decrease the synthesis of this, which is responsible for the prevention of sodium, which is responsible for the absorption of sodium potassium exchange में इसका इसका जो है वो क्वांटिटी कम कर देगा। स्पाइरोलैक्टोन क्या करेगा, इसका क्वांटिटी कम कर देगा। तो ऑब्वियसली इसका ये जो प्रोटीन है, ये पंप मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन कम कर देगा ये बाय एक्टिंग ऑन एमआरएनए, बिकॉज स्पाइरोलैक्टोन विल एक्ट ऑन इट्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये अगर क्वांटिटी कम होगा तो सोडियम का एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ। सो इफ देयर इज अ लेस क्वांटिटी ऑफ दिस पंप, sodium will not be reabsorbed and it will not be reabsorbed in the blood. Okay, so that's why it will cause excretion of sodium. Now what is the mechanism of amiloride? Next one is amiloride. It is again, it inhibits this pump, inhibit this sodium. Okay, sodium potassium antipode, it is antipode, sodium को अंदर लेके जाएगा, पोटेशियम को बाहर लेके जाएगा, sodium potassium antipode. Okay, so amiloride inhibit this sodium potassium antipode and prevent the reabsorption of sodium, because this sodium will be exchanged with the sodium potassium ATPase pump. So it prevent the reabsorption of sodium and causes diuresis. Okay, so spironolactone क्या करेगा, तो पहले तो ये दोनों अलग ड्रग है। spironolactone will act differently and amiloride will act differently. So this spironolactone will act on its intracellular receptor and will bring about the changes in the mRNA and will decrease the synthesis of protein. Which protein? This protein. Pump. So they will decrease the protein synthesis. That's why there is decreased absorption of sodium. ये पंप ही अवेलेबल नहीं होगा, कम अवेलेबल होगा तो कम होगा सोडियम का एब्सॉर्प्शन, तो एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा. So that's how spironolactone act. But this amiloride is a different drug. Amiloride potassium sparing diuretic, it will act on this sodium potassium antipode, inhibit the sodium reabsorption, because of the sodium because of the inhibition of sodium reabsorption, sodium will be excreted. बोलेंगे यहाँ पे पोटेशियम accumulate होना चालू हो जाएगा, though there is accumulation of potassium will be exchanged again by potassium pump. So that's how they will prevent the potassium loss. Other important points from diuretic chapter. So this slide is very important and इसके ऊपर भी क्वेश्चन. इंडिकेशन ऑफ डायरेटिक थेरेपी, डायरेटिक थेरेपी कब इंडिकेट करेंगे, तो इंडिकेशन ऑफ डायरेटिक थेरेपी, इडिमा एसोसिएटेड विद द सोडियम रिटेंशन सच एज कार्डियक इडिमा, हिपेटिक इडिमा, रेनल इडिमा. तो जहाँ पे भी इडिमा हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, तो वहाँ पे इसको इडिमा इन द प्रेगनेंसी, इडियोपैथिक इडिमा, पल्मोनरी एंड सेरेब्रल इडिमा, ओलिगोयूरिक renal failure, drug poisoning such as due to barbiturates and salicylates. So these are the indications for diuretic. Then again, hypertension is also indication of diuretics. Non-diuretic uses of diuretic drug. Non-diuretic uses of diuretic drug. Chlorothiazide is the drug of choice. Calcium urolithiasis. Calcium urolithiasis मतलब कैल्शियम का किडनी स्टोन. Then diabetes insipidus, इसमें भी हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड यूज करते हैं. Then hypernatremic state. पर मतलब ज़्यादा, natremic मतलब सोडियम. That's why in that to cause sodium loss. Hypercalcemia, furosemide is used. Glaucoma and motion sickness, acetazolamide is used. Drug causing the edema. There are certain drugs which can cause fluid and water retention. Example क्या है? Analgesic antibiotic, hydrocortisone, calcium channel blockers, and certain antihypertensive, testosterone, estrogen, and danazol. These are the drugs which can cause edema. This special point. Remember, furosemide is a vasodilator. Furosemide is also having vasodilator action, which is also responsible for the quick relief of left ventricular failure and pulmonary edema. As an intravenous drug. Metinide is the most potent than torsemide. Torsemide is the longest. Torsemide is having longest half-life. Okay. Ethacrenic acid causes the ototoxicity. ये आपको ear को damage करेगा, deafness करेगा. Causes the ototoxicity and sleep disturbances. Thiazide diuretics like loop diuretics, thiazide and loop diuretics, they increase the toxicity of digitalis by causing the hypokalemia and hypomagnesemia. कि digitalis अगर देना है तो उसमें diuretic कौन सा देना है?
पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक देना है, स्टेरॉइड्स के साथ में पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक देना है, थायजाइड नहीं देना है, फिरोसेमाइड नहीं देना है, बिकॉज except potassium sparing diuretic, all these causes potassium loss, and hypokalemia increases the toxicity of your steroids. We have seen in this last lecture. Remember last point, amiloride is a drug of choice. Amiloride is a drug of choice for the lithium induced diabetic insipidus. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Amiloride is a drug of choice in case of lithium induced diabetes insipidus. These are the very important points. Next last slide is nothing but the anti-diuretic hormone. Anti-diuretic drugs. We have seen the diuretic drugs. So diuretics means they will increase the urine formation. Anti-diuretic means they will decrease the urine formation. Okay. Anti-diuretic drug means it is nothing but the anti-diuretic hormone. So it is anti-diuretic hormone secreted by posterior lobe of pituitary. It is also known as a vasopressin. One anti-diuretic hormone is arginine vasopressin. जो आपका vasopressin है वो arginine vasopressin है. Mechanism of action, they act one on its own receptor. हार्मोन है तो हार्मोनल रिसेप्टर होंगे उसके. मैकेनिज्म क्या है? They act on a V1 and V2 receptor. Vasopressin 1, vasopressin 2 receptor. Vasopressin 2 receptor activation causes the increase in the sodium chloride absorption in the ascending lobe. Absorption बढ़ाएगा. डायरेटिक क्या करेंगे? सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन कम करेंगे. डायरेटिक एंटी डायरेटिक के वो एब्सॉर्प्शन बढ़ाएंगे क्योंकि सोडियम के साथ में वाटर भी आता है. सोडियम एंड वाटर दे आर इन अ लव विथ ईच अदर. उनके साथ में वाटर का बहुत प्यार है. ठीक है, उनको अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. जैसे सोडियम को आप बाहर निकालोगे तो वाटर को भी गुस्सा आएगा, वाटर भी उसके साथ में जाएगा. सोडियम वाटर दे आर इन अ लव विथ ईच अदर. दे आर इन अ लव विथ ईच अदर बट दे आर जस्ट सेइंग वी आर जस्ट फ्रेंड्स. तो वो अलग बात है. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का जहाँ रीअब्सॉर्प्शन होगा वहाँ पे वाटर का भी होगा, जहाँ पे सोडियम का एक्सक्रीशन होगा वहाँ पे वाटर का भी होगा. So this antidiuretic hormone increases the reabsorption of sodium. It increases the reabsorption of sodium. That's why water also absorbs. So increases in the blood volume. Pharmacological actions क्या है? किडनी के ऊपर क्या action है? What is the action on kidney? So reabsorption of water and distal tubule from connecting tubule, distal tubule and nephron, leading to reduction in the urine volume. Antidiuresis. Cardiovascular effect. What is the action of cardiovascular system? Increase in the blood pressure, direct stimulation of vascular smooth muscle, and also by increasing the volume of causes tachycardia, then later it causes bradycardia. It is also a neuromodulator in the CNS. It is a hormone in the CNS. Stimulation of V2 receptor increases the level of coagulation factor. Coagulation factor 8 क्या है? Anybody tell me? What is the coagulation factor 8? Coagulation factor 8 किसको बोलते हैं? कितनी बार पढ़ाया है आपको? पहले लेक्चर में ही पढ़ा था. कोई जाके देखते ही नहीं वीडियोस. एक कम अमाउंट में मिल गया ना तो ऐसे होता है. इट इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. दिस वाज क्वेश्चन इन GPAT 2019. फर्स्ट रिएक्शन क्या है इसके? नोशिया, बाइलरी कोलिक. बाइलरी कोलिक मतलब बाइल जो डक्ट है उसका स्पाज्म आ जाएगा. एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यू टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी, हाइपोटेंशन, shock and coronary spasm. It is used in the post-operative ileus of abdominal distension. Esophageal, also used in the portal hypotension. Acute hemorrhagic gastritis. It is used in the intravenous vasopressin. Is effective in the systolic cardiac arrest. Vasopressin is also used in the cardiac. Due to its anti-diabetic act, it is used in the diabetes insipidus. Nocturnal enuresis, bleeding disorders, benzthiazide like chlorpromide, also used in the diabetes mellitus. It also has an anti-diuretic effect. We can see over here vasopressin. Vasopressin means anti-diuretic hormone. So it will act on three receptor: V1 receptor, V2 receptor, and V3 receptor. They are nothing but the hormonal receptor. Okay. So activation of V1 receptor causes vasoconstriction, and it is used for esophageal varices. Esophageal varices. Varices मतलब openings. V2 receptor activation causes antidiuresis action. Useful for central diabetes. Useful for central diabetes insipidus and bedwetting. Arterial uresis. Release of factor 8. Factor 8 is known as a anti-hemophilic factor, and factor this VFP is known as a Willebrand factor. Useful for hemophilia and other
One Willebrand specters. One's Willebrand specter. Then activation of B3 receptor causes the release of adrenocorticotropic hormone. Last slide. ड्रग कॉजिंग नेफ्रोटॉक्सिटी. कौन से ड्रग को किडनी का टॉक्सिटी है. सो ऑफ एक्शन, एग्जांपल एंड नेचर ऑफ टॉक्सिटी. सो एक्सटर्नल टॉक्सिटी. सो टेट्रासाइक्लिन ग्लूकोcorticoid, okay, via protein breakdown they causes the activation of azotemia. Arteries and arterioles, उसको टॉक्सिटी करेंगे कौन. हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, बिस्मथ, gold salt, horse serum, long acting organic mercurials, sulfur drugs, iodides, thiazides, they causes vasculitis, मतलब ब्लड वेसल का इन्फ्लेमेशन. वेस्कुलाइटिस ये रिनल किडनी के ब्लड वेसल चल रहे हैं. ग्लोमेरुलस को कौन टॉक्सिटी करेगा, ये ड्रग्स. हाइड्रोलाइजिन लॉन्गर एक्टिंग सल्फर ड्रग्स के क्यों, क्योंकि सल्फर ड्रग का एक एडवर्स इफेक्ट होता है क्रिस्टल यूरिया. At that time when I will see the antibacterial drug, at that time also I will explain. So crystal urea is adverse effect of your sulfur drugs. They causes the crystal urea and vasculitis and glomerulonephritis. Convoluted tubules जो है उसके ऊपर कौन ड्रग एक्ट करते हैं. अमाइनो ग्लाइकोसाइड लाइक कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स, एम्फोटेरिसिन बी, पॉलीमिक्सिन बी, cephalosporin. These drugs can cause necrosis of proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and tubular epithelium. Interstitium. So phenacetin, NSAIDs, phenytoin sulfonamides, they causes interstitial nephritis with papillary necrosis. Main cause of acute renal failure or chronic neuropathy, chronic nephropathy. कलेक्टिंग ड्रग के ऊपर ये ड्रग एक्ट होती है. एस्ट्राजोलामाइड, सल्फोमाइड, एंटीन्यूप्लास्टिक, दे कॉज क्रिस्टल यूरिया, कैल्कुलाई मतलब वही किडनी स्टोन, हाइपर यूरिसेमिया, इंक्रीज इन द यूरिक एसिड लेवल. यूरेटर के ऊपर कौन सा ड्रग एक्ट होते हैं, यूरेटर के ऊपर कौन सा ड्रग टॉक्सिटी करते हैं, मिथाइल सरकाइड. So obstruction due to retroperitoneal fibrosis. These are the drugs which causes the kidney toxicity. Okay, today's session. इसमें